A very good morning, everyone. Now I am audible, I guess. There's a little glitch initially, so there was a delay of a minute. So everyone settle down. A very good morning to everyone. Now it's audible, I guess, right? Still not audible? Initially there was a little glitch and it was taking time. A very good morning, Prabjot, Suman, everyone, Avnees, Akhil, Avni, Dheeraj, K. Suman beta. Good morning, Subham. Is it okay now? The brightness levels and everything, if there is any kind of problem, you need to tell me now only so that I can manage the things, because there was some change in the settings. Let me have a look at it. So now I guess the brightness levels are okay. Now audible, great. Sorry. Okay. Now everything is fine. That's wonderful. Okay, yesterday we were talking about the growth trends, the distribution of population of the world, and today we'll be looking at India. Okay, from the Indian perspective, we had seen some of the reasons, the factors we have already seen, but we'll be moving beyond that. All okay? Great. Vivan, all fine on your end? Great, great. If everything is fine, that's wonderful. So we'll be looking at some of the things related to India. And yesterday, as far as I can remember, we talked about the various factors, and today we'll be looking at the population growth. Though this growth again we'll be looking at when we deal with one of the theories, but still I want to deal this thing separately. Okay, maybe it will be an effort of 15-20 minutes. It will be kind of repetition, but we'll do it this way so that you'll not get confused if the theory is asked and if there is a direct question. Okay. So, sorry. Just give me a moment. Just give me a moment. Somebody was calling, but let me see. Okay, so all fine. There was a delay. Just हाँ अपनी बेटा अभी भी infection है. There was slight problem. Okay. So there was a slight issue. Okay, we'll be looking at the lecture. There was a delay because somebody called up from the office. So we'll be looking at it. Just give me a moment. All fine, settle down. Okay. So we'll be looking at, like I said, the population growth of India. Then we'll be looking at the population policies and the population distribution. Population growth in India. Okay. Yeah, Avni beta, I'm taking medication, but some of the times medicines take time and they require certain precaution which I fail to take. The problem is also at my end, but I cannot help much. They want me not to speak much, but I cannot do that, right? I have to speak. Now, good morning, Bhavya beta. A very good morning. So everyone settle down. Everyone settle down. So we'll be looking at the phases. ये phase हम फिर से देखेंगे. Okay, from the perspective of a theory that we call as demographic transition theory, but still, if we do not look at this phase, probably it will not be very easy to understand rest of the topics, the density and everything. Okay, so we'll be touching this topic and then we'll move forward. So if we try to
divide this into the phases. Okay, will not be considering the old phase, will be only considering since 1900 in order to understand how the population has actually changed in the recent past. Okay, so the first phase that we'll be talking about is from 1901 to 1921. Okay, so phase 1, 1901 to 1921 is the phase that we'll be looking at. Okay, so what is this period? अभी अभी कोविड गया है तो आपको पता भी है कि क्या है कि 1920s में भी कुछ हुआ था, ऐसा बताते हैं लोग. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे स्टेबल रहा होगा, फ्लक्चुएट किया होगा, क्या हुआ होगा? Like I always tell you that if you can think a little, you can come up with the things which are right. Okay, and with respect to the population of India, you are residing here, what exactly is happening? Since childhood you have read many things. So what do you think, what could have been the things with respect to the population during this period? इस period में क्या हुआ होगा? More or less stagnant population, high death rate, high birth rate. कॉलोनियल पीरियड है, ऐसा समझिए जब आप गुलाम हैं. और वहां क्या है कि 1900 हिस्ट्री आपने थोड़ी भी पढ़ी है. यू नो दैट स्टिल द freedom fighters were not able to convince the government, okay, then government, that was colonial government, to take care of the people who are residing here. So they were not much concerned about the lives of Indians. Okay, it is not, we cannot say that decrease, but it was more or less stagnant. Vivan, okay, great. So this was a period which was marred by, अगर इसी में आप देखते हैं तो क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर भी हो रहा है, ठीक है, एपिडेमिक भी आया हुआ है, ड्रॉट ईयर्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. ओके, दिस इज अ पीरियड वेयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वेर देयर. ओके, सो फाइनली initial years till 1914 you can say that not much change was there, overall decline was there. ठीक है, डिक्रीज जिन्होंने लिखा है वो सही है, लेकिन वो लास्ट फेज है जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंटर करते हैं 14 के बाद. ओके, सो दिस वाज अ पीरियड व्हेन सडनली द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. एपिडेमिक और वर्ल्ड वॉर दो चीजें मेजर इवेंट्स में से एक है जो इसमें हुआ है. सो ओवरऑल इनिशियल फेजेस, the death rate was high, the birth rate was high, so stagnant population. But with these two, okay, later decline in population. Okay, so if you can remember this much only, you can easily write in exam कि what was the condition. Okay, तो आपको पीरियड समय के हिसाब से समझना होगा कि क्या था उस समय. इट इज नॉट अबाउट कि मगिंग अप की डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इफ यू नो द टाइम फ्रेम, यू नो दैट देयर वाज अ कॉलोनियल पीरियड, देयर वाज वर्ल्ड वॉर, देयर वाज एपिडेमिक, सो यू नो दैट फाइनली द पॉपुलेशन डिक्लाइन विल बी विजिबल. बट इनिशियल ईयर्स, जैसा हमने वर्ल्ड के पार्लेंस में भी देखा है, बिफोर द एडवेंट ऑफ द मेडिकल रेवोल्यूशन स्टैग्नेंट चल रहा था, बहुत लोग मर रहे थे, बहुत लोग पैदा हो रहे थे. ओके, विकास, ए वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. So write down, during this period, India was under colonial rule. During this period, India was under colonial rule. During this period, India was under colonial rule. So, in general, the population didn't had access to health and education facilities. In general, the population did not had access to health and education facilities. Health and education facilities. Full stop. The birth rates and death rates were very high. The birth rates and death rates were very high, resulting into
a stagnant population, resulting into the birth rates and death rates were very high, resulting into a stagnant population, resulting into a stagnant population in the early decade, in the early decade. Okay, full stop. The second, after 1914 लिख सकते हैं, ठीक है. After 1914 या 1913, India was pushed into World War. India was pushed into World War. Battled epidemic and famine. India was pushed into World War, comma, battled epidemic and famine, resulting into decline in population, resulting into decline in population. Okay, तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि इसे ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं. ओके, फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यहीं पे लिख लेंगे तो आगे दोबारा लिखना नहीं होगा. दो आई विल एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम. फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसका नाम रख दीजिए. ओके, सो दिस इज व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, विल सी. ठीक है, वो हम देखने वाले हैं. ओके, दिस इज स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कह के हम पढ़ने वाले हैं आगे. विल बी स्टडिंग दिस थिंग, बट हियर फेज वन इज, this is also first phase of demographic transition. Okay, now if we talk about second phase, that will become the second phase of the demographic transition, that is from 1921 to 1951. Phase 2, 1921 to 1951. Lot of people died, world war happened, who's and cries. तो अभी रिएक्शन क्या होगा इन जनरल पॉपुलेशन का. ओके, एंड दिस इज सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ओके, द सेकंड फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. यहां पे क्या होगा, अगर अचानक अभी क्या हो रहा है, अभी के भी एग्जाम्पल से अगर आप देखते हैं, देयर इज सम इवेंट विच लुक्स लाइक द पीपल आर बीइंग exploited. People go against the government, they start protesting, they want their rights, that kind of thing still we see. ठीक है, धरने पे जाएंगे लोग, बोलेंगे, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, कंसेशंस देती है. तो एट दैट पॉइंट इन टाइम इफ यू लुक एट कंसेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर, एपिडेमिक, फेमाइन, सो क्या है, खिलाफत मूवमेंट आ गया इसी पीरियड में. ठीक है, नन कॉपरेशन होने लग गया. सो लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग. इट मीन्स दैट गवर्नमेंट वॉज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर. अगेन थिंग्स वेंट हेवायर. इसी पीरियड में क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा रहे हैं. कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड द सपोर्ट ऑफ द कंट्री विच इट इज रूलिंग, क्योंकि उसको आर्मी चाहिए थी अपने आप को बचाने के लिए. सो व्हाट विल बी द कंडीशन इन दिस फेज इफ यू लुक एट दिस पीरियड, थिंक ए लिटिल एंड यू कैन कम अप विद द राइट थिंग. द गवर्नमेंट विल बी कंपेल्ड टू कम अप विथ हेल्थ इंटरवेंशंस. ठीक है, लोग फेमाइंस में मर गए, लोग एपिडेमिक्स में मर गए, तो पहली चीज गवर्नमेंट क्या करेगी, एजुकेशन अभी भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द फर्स्ट थिंग दैट द गवर्नमेंट विल डू इज द गवर्नमेंट विल कम अप विथ सर्टेन इंटरवेंशंस. ठीक है, वो थोड़ा सा अपीज करने की कोशिश करेगी पॉपुलेशन को, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू सम पॉजिटिव आउटकम्स. ओके, सो डेथ रेट विल रिड्यूस, बट बर्थ रेट क्या है, आप एजुकेट नहीं कर रहे हैं अच्छे से, population masses are not being educated, so birth rate will remain high but the death rate is less, so the population keeps increasing. Okay, so government interventions, a lot of facts and figures we'll be seeing later, हम दोबारा पढ़ने वाले हैं ये. Okay, in short, what government interventions help to lessen the death rate, but
the birth rate remained high. So birth rate is high, death rate is less. It means what? There's slight increase in the population. Okay, so there was increasing trend of the population. So if you can correlate the times, what was the situation there, then you'll not be mugging up. आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी अगर आप समय को सोच सकते हैं कि कैसा टाइम था ये. Okay, hereafter we are going into another phase. We'll be moving into another phase. अब situation क्या है? Independent India, lot of aspirations. The freedom fighters are the ministers. The freedom fighter is the prime minister. The freedom fighter is the home minister. The freedom fighter is the health minister. So they are doing everything in their capacity to make sure that the people get the benefits. Okay, so write down. So now we'll be moving into the third phase. The time period को सिर्फ ध्यान दीजिए, याद नहीं करना होगा. You'll always be able to write the answer. Okay, phase 3. And this is, like I said, third phase of the demographic transition भी आप इसको कह सकते हैं. Okay, this is a phase from 1951 to 1981. So what do you expect here? So everything that was possible was being done. Government कर रही है, medical facilities बढ़ गई, standard of living बढ़ गया. ठीक है, people are free to choose their professions, बहुत सारे काम होने लगे. So what will happen in this period? अगर फेमाइन हुआ भी तो गवर्नमेंट वाज इन अ पोजीशन टू गेट फूड. ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया में यू मस्ट हैव रेड इन इकोनॉमिक्स की यूएस ने हमें बुरा भला बैगिंग बॉल बोल के भी खाना तो दिया था. ओके, सो द गवर्नमेंट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू minimize the negative effects of diseases. Especially government spent a lot on food, on health infrastructure. So there was exponential growth rate. This is an exponential growth period. Okay, this was the first time that the people of India realized that they are no more threatened. And the government was under obligation that we have to do a lot for the people because people have suffered for so many years. Okay, so the birth rates remained very high, death rates were low due to the development of health infrastructure. Okay, so write down. Okay, everyone. Astha beta, a very good morning. Everyone settle down. So just relate to the periods and you'll be able to write on your own. Okay, you'll not have to mug up anything. So write down. This period is referred as the period of explosive growth rate or growth period. This period is referred as the period of explosive growth rate. Explosive growth rate or exponential growth period. Explosive growth rate or exponential growth period. As the government of independent India, invested a lot to develop the infrastructure of health. As the government of India invested a lot to develop the infrastructure of health, and thus there was a sharp decline in the death rate. हाँ, शुभम will be looking at all other factors. Maybe हम general देखना चाह रहे हैं कि आप बिना रटे हुए भी क्या लिख सकते हैं. Food security and everything happened. Okay, but if you look at green revolution 66 से 70 में वो start हुआ था, तो last decade you can say कि हाँ खाना भी बहुत easily available था. But just before that 64
India was called the begging ball. Okay, drought periods. Still, the health infrastructure was robust when compared with the colonial period. ऐसा नहीं कि आज से भी अच्छा था. It is being compared with the colonial period. Okay. Now the fourth phase. इसमें we'll look in much detail later. Just to have an idea, we are looking at this one, 1981 to, you can, present times. Okay, because we'll be reading demographic transition theory in detail. We'll be looking at various aspects. So we'll be seeing there. तो अभी का तो आपको पता है, अभी क्या हो रहा है? This is a period when the government started taking measures. ठीक है, पहले जस्ट इसी से पहले क्या हुआ था? इमरजेंसी आई थी. ओके, सो पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम ऑफ श्योरिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द डे. ठीक है, पॉपुलेशन को वो प्रॉब्लम मान रहे थे. गवर्नमेंट डिड एवरीथिंग in their capacity to make sure that population doesn't grow. Okay, and during emergency you must have heard that so many sterilization, forced sterilizations. Okay, some of the estimates suggest that 3 million people were sterilized. Okay, WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि 3 मिलियन लोगों को कर दिया गया था स्टरलाइजेशन. Okay, so 3 million is lot number, right? So with government efforts and some of the programs that the government was running, people also realized that a lot of population can be a problem in the future. So the growth rate started declining, and now we know that many of the states are even below this. Okay, some of the states are above this, but most of the states are below this. 1.8, 1.9 वाले बहुत सारे state हो गए fertility rate में. So this is a period of decline. So write down. The initial phase was a period of high growth rate. The initial phase was a period of high growth rate. But with government interventions, comma, people's realization, government intervention, people's realization, the rate of growth of the population, started showing a declining trend. And the country is moving towards a stable population, that probably can be achieved in near future. It's moving towards a stable population that probably can be achieved in near future. Okay, that probably can be achieved in near future. So this is basic trend. A lot more details we'll be seeing. Like I said, we'll be seeing a lot more detailed discussion when we cover the demographic transition theory. But if you look at the whole thing, and we kept mentioning since independence, ठीक है, independence के बाद से कि government कुछ कर रही थी, तो ultimately क्या कर रही थी? You need to understand कि what the government was doing, what policies were actually adopted कि ये चीज हो पाई, या बीच में नहीं भी हो पाई. Initial phases also many of the people had recognized in the 60s population is a problem, still it failed. So what the government did, so we'll be looking at the policy framework, and that is of major interest. ठीक है, because today one child policy, two child policy, ठीक है, अभी यूपी असम 2 child policy की कॉल आ रही थी, you must have read in the newspapers. So why such call is there, and what are the various things that the government has done in past that still they are dissatisfied and still they want to make changes? So we'll be looking at it. Okay, why China's population ultimately it was checked and then negative growth to world view, that will
understand if we look closely at the policies adopted by the government of India. Okay, so we'll be talking about the population policies in India. Because when you get through the exam and you become an IAS, you'll be the one who will be implementing the policy or will be framing the policy when you become secretary. ठीक है, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे तो इम्प्लीमेंटर होंगे आप, फिर आगे जाके आप सेक्रेटरी लेवल पे जाते हैं, रेस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे पहुंचेंगे तो आप फिर पॉलिसी बनाएंगे भी, तो आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क समझना बहुत जरूरी है. ओके, so we'll start from independence only, because before independence this independence was not there, so the government was not able to do what they want. Indians के हाथ में कुछ नहीं था. Okay, so we'll start from the 1950s. Okay, the national population policy and all, वो बाद में हम देखेंगे. We are looking at some of the minor things that the government started doing. Okay, so 1950s, this was a period where the government, when it started recognizing कि हाँ population problem हो सकती है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है जब से medical facilities बढ़ी हैं. ठीक है, even after Second World War, so many deaths, the population was still increasing. So government was under the colonial mindset. They only knew few things about it, कि if we'll use some contraceptives, okay, some medical facilities, then and then only we can control the population. So this phase of 1950s is called as the clinical approach. Okay, here the government's approach was completely dependent on the medical technology. Okay, medical के methods पे. But the problem is, like, at that point in time, the new bureaucrats who were there, the government of the day, did not recognize कि people are ashamed of this thing. Okay, they'll not openly tell कि मुझे क्या है नसबंदी करवा लेनी है, I want sterilization, ऐसा नहीं बोलेंगे. Okay, they did not figure it out. Plus the religious feeling. Okay, बच्चे तो भगवान की देन है, that kind of feeling. So both these things did not allow it to succeed. But we have to see ki what government did and why it failed. When you'll understand ki what was done and why something failed, then and then only you can come up with some other approach which can actually work, right? अभी present policy जो भी fail है, वो आप उसके failures का reasons देखते हैं, तभी आप एक नई policy अच्छी ला सकते हैं, right? So clinical approach was the period when government was bent towards medical sterilization. Okay, वहां भी इन्होंने ये focus किया था. Contraceptives, healthcare. Okay, so write down. During 1950s, the independent government of India focused more on contraceptives, comma, healthcare, etc. etc. The government also tried to create awareness कि population के क्या problems है, family के लिए क्या problem है, poverty से कैसे related, okay, what is its relation to the development, growth, poverty, everything. Government tried to make population aware of the things. Okay, the government also focused on the awareness and wanted people to adapt the family planning programs. Wanted people to adapt the family planning programs.
Okay, full stop, change the para. This approach was not much successful. This approach was not much successful because childbirth in Indian society, because the childbirth in Indian society was often associated with the fateful view or Bhagyavati view, was often associated with the fateful view. And people in general avoided visiting these clinics. Okay. तो अभी क्या है, whole of the thing is happening and the growth rate of population jumped from 13% to 20%, 21%. Okay, so you can see that it is complete absolute failure. ये कम हुआ ही नहीं है, ये तो बढ़ गया है. ठीक है, 13% to 21%. This is a period when the government is trying this. But the government now recognizes that 13% to 21%, it means that the people were not considering even this thing. Okay, कोई consideration ही नहीं है. People are not ready. Okay, so they started reviewing this thing. Okay, so in 1960s, they came up with new approach. Okay, so in 1960s, previous failure, warranted new approach. अब यहां पे पहले फेल हो गया. Okay, the population was not controlled. So government came up with the idea of two approaches. First one was called as cafeteria approach. And the other one is called as extension approach. Okay, how the policy changes. This is going to help you to understand कि policy बार बार क्यों बदलते हैं. ठीक है, and this is important. If some policy is changed, it means that there were certain lacunas जो कि cover नहीं कर पा रहे हैं, जो कि achieve नहीं कर पा रहे हैं result जो चाहिए. Okay, now this cafeteria approach, if we talk about, they ask the people कि you choose your way. Okay, अभी क्या है कि आप लोगों को जाके male sterilization की अगर हम बात करें, okay, India is a country, India is such a country, the male pride is so dominant that if we look at the history of sterilization, 92% contraceptives or sterilization process is associated with the females. ठीक है, मेल क्या है कि वो नहीं जाएगा. तो गवर्नमेंट अंडरस्टूड दैट वी आर मेकिंग मेल्स अवेयर. ओके, बिकॉज इन जनरल फीमेल्स आर नॉट गोइंग आउटसाइड. अभी नहीं इतना ज्यादा बाहर जा रही है, तो उस समय कैसे जा रही होंगी. सो द गवर्नमेंट आस्क द पीपल चूज योर ओन वे. स्टेरिलाइजेशन जरूरी नहीं है, यूज सम कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है, मे बी यू टेक पिल और मे बी यू कैन यूज कॉन्डोम्स. इट इज योर चॉइस, वी आर नॉट फोर्सिंग. तो क्या है, हॉस्पिटल्स में रख देते हैं, पब्लिक जाए अपने बात करके, किसी से मत मिलिए, बट यूज. ओके, सो गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन गिविंग ए चॉइस of contraceptives to the people. Okay, you choose. आपको कुछ एडवाइस नहीं दिया जाएगा, आपको बस बताया जाएगा कि दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड. वॉट एवर यू फेवर यू कैन चूज. ओके,
सो कैफेटेरिया अप्रोच, जैसे आप कहीं जाते हो होटल में तो आपको क्या देते हैं, मेन्यू दे देते हैं, ठीक है, मेन्यू से आप देखते हैं मुझे कॉफ़ी पीना है, मुझे समोसा खाना है, मुझे रोटी चाहिए, दाल चाहिए, ओके, दैट काइंड ऑफ अप्रोच की nobody is forcing you, just choose your own contraceptive, your own way, but do it because it is problematic, okay. But the last awareness program had also failed, and they tried to discover ki what was the cause of failure of the last awareness program. So they discovered that less funds were there, plus the mass media was not there, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बता रहे, डॉक्टर्स बता रहे, वहां जा ही कितने लोग रहे, ओके, और जहां ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से लोग डरते थे, इंडिपेंडेंट भी हो गया तो ब्यूरोक्रेट्स आज भी पावरफुल है. तो एक्चुअली द पीपल हु वर sent to make people aware, they were not going to meet the people, okay. So at this point in time the government focused, allotted more funds for awareness campaigns, and now the mass media was involved. To make people aware, न्यूज़पेपर में आने लगे, okay. But if you look at this period as well, okay, now also the problem was like, even if I have been given a choice कि वहां जाके और आप क्या है अपना चूज कर लो, people are not ready to go to the clinics which are providing this thing. Mental blockade है, वहां जाएंगे लोग पूछेंगे, ठीक है, people will question the manlyhood. So males avoided, और बिना मेल को पूछे हुए फीमेल जा ही नहीं सकती थी. So the population that was increasing at the rate of 21% then when they came up with this idea, by the end of this period it was growing with a rate of 24.8%. The population still growing at a rate of 24.8%, okay. Again you can say it was absolute failure, पूरा decade बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हो पाया, okay. So nothing was achieved because this figure is much more than what it was. 21 से 24.8, it is much more, okay. And now the frustration was visible in the implementers, the frustration was visible in the people associated with the government. 1970s जहां जबरदस्ती स्टार्ट होती है, ओके, लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं समझेंगे, ओके, तो क्या करना है, डायरेक्टली द गवर्नमेंट कैन नॉट गो टू द पीपल, बट द पीपल विल फॉल इल, पीपल विल कम टू द हॉस्पिटल. सो दे स्टार्टेड गिविंग टारगेट टू द मेडिकल फैसिलिटीज, टू द ब्यूरोक्रेट्स. भाई हमें नहीं पता है, इतना टारगेट होना चाहिए. सो देयर वॉज अ टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच. And you can see that when targets are given, we usually see any of the programs. If you'll tell the bureaucracy that क्या है 4,000 लोगों का क्या है पोलिंग का आज के आज हो जाना चाहिए, तो क्या होता है, बेटे का डेट ऑफ बर्थ पापा का हो जाता है, दादा का डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे का हो जाता है. सो बहुत सारी गड़बड़ियां होती है, ओके. सो दिस वाज अ पीरियड ऑफ टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच, ओके. ऑल द पॉलिसीज वर इंटीग्रेटेड, ओके. टारगेट क्या है, रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन. एंड नाउ एवरी पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट हैड, be it health, be it education, be it literacy, it was clubbed with the population. अब हर में टारगेट है कि आपको इसको अप्रोच करना ही करना है, ओके. इफ यू वांट न्यूट्रिशन केयर, गवर्नमेंट क्या है आपको फूड देती है, 2 ही बच्चे को देंगे, ठीक है, 4 बच्चे पैदा किए, चारों को नहीं मिलेगा. सो इट वाज सम काइंड ऑफ फोर्सफुल थिंग,
Okay, it was not like giving a choice to the people. If you don't do this, we'll do this. Okay, 4 बच्चे गवर्नमेंट जॉब चली जाएगी, अभी जैसा चल रहा है आजकल. Okay, so this is forcing the people. This is not the right way. Okay, एक अच्छा वे नहीं कहा जाएगा इसको. So write down. The policies were integrated with health, education and nutrition care. The policies were integrated with health, education and nutrition care. Health, education and nutrition care. Full stop. The targets were set. The targets were fixed to bring the birth rate down. The targets were fixed to bring the birth rate down. To bring the birth rate down. And hence, the marriageable age was also increased. And hence the marriageable age was also increased. 21 years for male and 18 for female. 21 for male and 18 for female. Full stop. The emergency, last phase 1977-78 को अगर हम देखते हैं, 75 के बाद ही, the emergency brought coercive element in it. Okay, forced vasectomy. The emergency brought coercive element to it and lot of forced vasectomy. Okay, coercive element to it. Okay, this approach had a lot of negative reactions. This approach had a lot of negative reactions towards the government. And hence, this approach had lost lot of negative reactions towards the government. And hence, the government came up with new approach. And hence, the government came up with new approach, 1980s. Now, there, यहाँ से क्या है, शुरू होता है सही की तरफ बढ़ना. ठीक है, समझते हुए लोगों को. This is educational approach. एजुकेशनल अप्रोच, राइट. 1980s, क्योंकि नई नई गवर्नमेंट थी, कभी रूल तो किया नहीं था, तो गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं. ठीक है, इट इज समथिंग लाइक इफ समबडी इज डूइंग समथिंग न्यू. नाउ पीपल नेवर हैड डेल्ट विथ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट दे वर डूइंग. एंड उस जमाने में ऐसा डाटा थोड़ी मिल जाता था. इट वॉज नॉट ईजी टू गेट द डेटा. ओके, सो एजुकेशनल अप्रोच 1980s से स्टार्ट होता है. ओके, नाउ द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड इट इज द पीपल हु कैन ब्रिंग द चेंज. Okay, so we must focus on the role of the people to make themselves aware. ठीक है, कुछ एजुकेटेड लोगों को पकड़ो. गांव में जो क्या है कि लोग हैं जो थोड़ा समझ रहे हैं, उनको समझाओ, वो बाकियों को समझा लेंगे. ओके, एंड सम पॉजिटिव मेजर्स. नाउ द गवर्नमेंट वाज वेरी क्लियर कि वी नीड सम लॉन्ग टर्म अप्रोच. अभी एक डिकेड में कम कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा. लेट अस डू समथिंग विच विल give the results in the long run at least. If not in a decade, maybe in 2-3 decades we'll get the results. यहाँ से long term approach start होता है. Okay, so write down. The government identified the people's role. The government identified the people's role and the role of education. Now the government identified the people's role and the role of education as the most important instrument of fertility control. As the most important instrument of the fertility control. ठीक है, अब क्या है, अवेयरनेस पे ही फोकस किया गवर्नमेंट ने. अब स्लो प्रोसेस चलेगा. ओके, सो दे आर डूइंग सम ऑफ द थिंग्स फॉर 1 decade. उस पे बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स दैट दे गेट, दे चेंज द थिंग, अगेन डू समथिंग. Now,
इसके बाद क्या है, टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच हैज एक्चुअली बैकफायर्ड, स्टिल इट वाज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. सो पीपल वर नॉट बिलीविंग कि व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग. इनको हमेशा डर है अभी एक डिकेड तक, क्योंकि आप क्या है कि एक जनरेशन भी नहीं चेंज हुई है. ओके, सो 1990s they declared that this is target free approach. The said objective was that do not target anything. हम ऐसा नहीं कह रहे to the people who are concerned in implementing कि there is a target. आप target मत करिए. Okay, and इसके लिए हमने क्या किया, there was a international conference that held in Cairo. Okay, and based on this norm हमने अपने लोगों को बताया 90s में कि look, whole of the world is trying to adopt a small family norm and they are becoming prosperous. देखिए वेस्ट यूएसए कितना prosperous है, ब्रिटेन कितना prosperous है, because they have small families. and India was struggling. ठीक है, हम इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे थे. पीपल वेयर बिकमिंग मोर एंड मोर एस्पिरेशनल विद टाइम. बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था, यूएस जा रहे थे, ब्रिटेन जा रहे थे. ओके, सो दैट वाज अ पीरियड, इट वाज इजी टू convince people when we said कि we are looking forward to small family norm. ठीक है, हम बच्चे को कंट्रोल करेंगे ऐसा नहीं है, आप करिए, इसके फायदे देखिए. We were focusing on the positive side. Small families, more disposable income, good education. Your son can work in US, your son can work in Canada, your son can work in France, Germany, Britain. तो ये क्या है, एक मेंटल चेंज लाने की कोशिश की गवर्नमेंट. ओके, सो टारगेट फ्री अप्रोच, राइट डाउन. In pursuance of the International Conference on Population and Development, in pursuance of the International Conference on Population and Development, ये कायरो में हुआ था, इजिप्ट में. Population and Development, कायरो, इजिप्ट. Government projected a small family norm. Government projected a small family norm as social responsibility. As social responsibility. As social responsibility through reproductive and child health program. Through reproductive and child health program. Okay, through reproductive and child health program. लोगों को ही ये सिखाइए कि भाई मेरी जिम्मेदारी है. लाइक स्वच्छ भारत, एवरी नेताजी विथ झाड़ू, फोटो अपलोड. ओके, वोटिंग, सब लोग फोटो अपलोड कर रहे हैं. तो पीपल को ही ऐसा फील करवाइए कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल. यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सोसाइटी. ओके, so when the campaigns like this run, you have seen that the voting percentage increases, cleanliness increase, Swachh Bharat Abhiyan was successful. So that kind of thinking that let people feel कि if I have more children then I am wrong. आज भी होता है, किसी के 10 बच्चे हैं वो बताते नहीं है. सेंसस वाले पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, बोलेंगे 3 है. अपना बच्चा दिखा, यहाँ तो 10 दिख रहे हैं, तो पड़ोसी का है, खेलने आया है. Okay, that kind of thing. So they made it a social norm, but the government was also aware that it will take time. Okay, so finally after doing so many things and so many results were there, okay, and this policy was not for less time. 1 decade government ये एक social responsibility का message भेजती रही. Okay, and finally in the year 2000 they came up with a comprehensive policy which we call as National Population Policy.
where we again started targeting, but it was not for the people. The government set targets for themselves. Okay, ये लोगों को जबरदस्ती वाला नहीं. Okay, national population policy. So all the experience that the government has gained over a period since independence, उसको use करके ये policy बनाई गई, the national population policy. Okay, and they were very clear कि we are not here to do something in 5 years, 2 years, 10 years. Okay, so they took into account कि what we can achieve in a short term, what we can achieve in the intermediate term, and what we can achieve in long term. ठीक है, तो immediate objective medium term objective and long term objective. Okay, there are few things that can be achieved in less time, तो वो मीडियम टर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लियरली सेग्रीगेट किया गवर्नमेंट ने 2000 में. ओके, विथ ऑल द एक्सपीरियंस दैट द गवर्नमेंट हैड. जब हम गवर्नमेंट कहते हैं तो वो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी नहीं होती है. गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट. ओके, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स क्या है, वो पीछे वाले को देख के ही वो चल रहे होते हैं. improvement, improvement, improvement. ठीक है, political parties are altogether different thing, but all the governments have been responsible for the country, so we are so developed today when compared with 1950s. ठीक है, हर गवर्नमेंट ने हमें आगे बढ़ाया है, हमारा नेशनल इनकम ज़्यादा बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा बढ़ा है. ओके, सो वी आर टॉकिंग ऑफ गवर्नमेंट एज ए होल, नॉट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड न्यूट्रलिटी इन ब्यूरोक्रेसी आपको समझनी है, क्योंकि आपके एथिक्स के पेपर में भी है. ओके, सो इमीडिएट में क्या है, दे फोकस्ड ऑन अनमेट डिमांड्स. नाउ द पीपल आर रेडी, बट स्टिल द पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू द कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन रूरल एरियाज. तो यहां ये क्लियर किया कि हम रूरल एरियाज तक भी कैसे पहुंचाए. अर्बन एरियाज पीपल आर नाउ अवेयर, दे आर यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बट हाउ वी आर गोइंग टू रीच देयर. सो टू मीट द अनमेट demands of contraceptives. Okay, so this is something that was the primary focus. और भी बहुत सारे थे, लेकिन हम किसको देख रहे हैं? We are just focusing on the thing which was the main agenda of the government at that point in time when they framed the policy. Okay, we are focusing on that. So this was the top priority of the government. Okay, plus they knew that health care is also important. So contraceptives and health care पे focus करना है, ये clear हुआ. Okay, now the mid-term objective to bring down the fertility level to replacement level, fertility rates to replacement, that is 2.1. rates to replacement level in a decade. But ऐसा एकदम hard and fast नहीं है, because now the targets are not fixed. Okay, with a scope of revisions. So this thing decade is not fixed. Okay, if need be we'll take a little more time, we'll revise that. ठीक है, एक decade में हम फिर revise करेंगे कि ये achieve हो सकता है कि नहीं. Okay, and to achieve stable population, बाय 2045, ये लॉन्ग टर्म का जो अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करना पड़े, हम अचीव कर लें.
Okay, though revisions will be of course there. This was decade का मतलब by 2010 we wanted to achieve this, but we know कि now is the time when we achieve this thing. Mid term objective ही लंबा हो गया. Okay, so this is something that was the main objectives of the government, and the government tried to do this thing. Okay, and lot of other things were done by the government. Government understood that it is not the work of some bureaucrat only to take care of this. Until and unless the supervision is at the highest level, things will not be in line with the targets. तो क्या है, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन बनाया. ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन headed by the prime minister, and if some agency or committee is being headed by prime minister, everybody works. ठीक है, अभी मोदी जी बुला के पूछे किसी को कि क्या चल रहा है तो आपको जवाब देना है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो मुझे पता नहीं, राइट? So with this they also came up with the national population commission. And here the prime minister is responsible. The prime minister will take care of how these policies are approached. ठीक है, so more responsible people. So NPC, the prime minister is the head of the NPC. The prime minister is the head of the NPC. And it is a interministerial body, and it is an interministerial body with representation from NGOs, with representation from NGOs, and PM. Okay, it reviews, full stop के बाद लिखिए, it reviews and directs the implementation of the national population policy, okay. So overall if we see, अभी भी population policies में कुछ आगे पीछे बहुत सारी चीजें हो रही है, but it is being done under the ambit of this thing only. Okay, फिर मिशन परिवार विकास बहुत सारे हैं, but we are focusing on the broader things. इसके अलावा क्या यूज करना है? You have to focus on news. You need to focus on current affairs, to pick some policies which are in news, and add this thing in your write up. ठीक है, करंट एग्जाम्पल जो सबसे नया है, ये सब बेस है. अप्रोचेस it can be asked anytime. Okay, how this population policy of India has evolved over time. ये एक क्वेश्चन है अपने आप में 20 नंबर का. Okay, so you will be writing about this, and you just have to add something which is in news in the very year when you appear for mains. Somebody appearing this year, you got to make sure that अभी prelim से पहले जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ पढ़ा है तो वो ऐड कर देंगे. जो बच्चा 24 में देगा, somebody giving in 25, you just have to make sure that you are picking some of the news that was in news in the very year when you are appearing for mains. ठीक है, बहुत पुराना नहीं लिखना है. पुराने में सिर्फ हम बेसिस को लिखेंगे जब अप्रोच चेंज हो रहा है. Everybody is clear with this or not? अभी somebody who is planning to give the exam in 2025 and noting down all the news items of this year will not help. ठीक है, if you are writing mains in 24, then from now onwards you need to follow the news. Somebody 25, तो आप 24 में मई के बाद पढ़िए, तब उसका नोट करिए. ओके, ऑल गुड, एवरीवन इज क्लियर?
हाँ ना? Everyone is clear with this or not? Clear है everyone? Okay, अभी population problems measures to control the population will study. लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? First I am focusing on the topics which are directly mentioned in your syllabus, or indirectly there is a hint that it can be asked. Okay, modern context, solutions and everything, of course it is also mentioned in the syllabus, we'll see that. But यहाँ तक अगर clear है तो I'll now focus on the distribution and density of population. Okay, that is also mentioned in your syllabus. Great. So let us move forward to density and distribution of population in India. Okay, if they ask density, you have to write this. If they only ask distribution, you have to write this. ठीक है, इनको अलग नहीं करेंगे. सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन भी क्वेश्चन में आप राइट अबाउट द डेंसिटी थिंग, यही वाला राइट अप लिखेंगे. Okay, things are easy. अभी उसमें अप्रोचेस में क्या है, इफ यू कैन जस्ट थिंक अबाउट द नेम तो कंटेंट आपको याद आ जाएगा. Okay, this is the reason that I talk about the background as well, so that at least you will have an overview of what exactly it is. Okay, giving a write up is very easy. Okay, we can cover this syllabus within 7 lectures as well, but it won't fetch you more. If there is a little discussion, it helps you to keep things under control. Okay, so I hope that everybody is clear. Okay, so अगर population को आप distribution को देखते, do you think that each and every place in India is having same type of population? No, we don't have, right? Okay, if you look at UP, Bihar, too many people. Okay, countries में नहीं होते जितना उतने एक एक स्टेट में है. But if you look at some of the states, big ones, large area, but still very small population like Rajasthan. ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन है रिलेटिवली, लैंड टू पीपल देखें तो. ओके, इफ यू गो टू द माउंटेनियस स्टेट, अरुणाचल चले जाइए, वो और साइज के हिसाब से बहुत ही कम पॉपुलेशन है. सच ए बिग स्टेट, मैप बनाते हैं तो बड़ा सा अरुणाचल दिखाई देता है, बट द पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट 20 lakhs, 16-17 लाख पे खत्म हो जा रहा है. ठीक है, सो द डेंसिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सम ऑफ द फैक्टर्स. सो विल बी लुकिंग एट द फैक्टर्स एंड विल बी डूइंग दिस टॉपिक इन अ वे कि किसी भी सेगमेंट पे क्वेश्चन आता है तो आपका ये राइट अप आपको वर्क कर जाए. एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर हेड एज वेल. इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ the questions that have been asked in past, this is the most favorite topic. Okay, so there is uneven spatial distribution of population in India. ठीक है, तो अगर एक बेसिक नेचर की बात करें, uneven spatial distribution of, spatial is space, स्पेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन. स्पेस का मतलब आउटर स्पेस ऐसा आसमान में चलेगा ये नहीं होता है. स्पेस इज एरिया, रीजन, राइट? सो अनइवन स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population in India. Okay, a lot of factors are responsible for this thing. Okay, and we have seen बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो लैंड कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हॉस्पिटलिटी ऑफ द टेरेन. ओके, एंड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस यू कैन टॉक अबाउट. ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें रीजंस, कोर रीजंस की अगर हम बात करते हैं, ओके, सो हिस्टोरिकल प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट. ओके, हिस्टोरिकल प्रोसेसेस से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म हिस्टोरिकल प्रोसेसेस? बाकी तो आसान है.
ओके, हिस्टोरिकल प्रोसेसेस से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक? हाँ धीरज बेटा, दैट इज ट्रू. लैंड कैपेबिलिटी, the places where the civilizations started, settlements started, people frequented since immemorial times, they still have more population. जहां पे आप देखते हैं अभी, यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कहां से स्टार्ट करते हैं? जो आप सिविलाइज्ड हड़प्पन कल्चर से ही स्टार्ट कीजिए, कहां लोग रहते थे, कहां मिल रहे हैं लोग? So those areas where the civilizations were there, kingdoms, empires, flourished. They have more population. So the river plains, historically you'll see that they were always densely populated because all the things were happening there. Seat of power है यहाँ, ठीक है? बिहार में क्यों है? मौर्यन पीरियड पूरा का पूरा देखिए आप, उसके बाद की पूरी हिस्ट्री देखिए, वो पूरी हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री कहाँ की लगती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिहार एंड इट मूव्स टूवर्ड्स राजस्थान, वहीं पे सब कुछ हो रहा है ऐसा लगता है हिस्टोरिकली. साउथ में भी अगर आप देखेंगे, बिग किंगडम्स, एम्पायर्स, वेयर एवर दे इमर्ज्ड, still high concentration of people. Okay, so historical processes, if we talk about all the places where civilizations, kingdoms, empires flourished, they were the areas where actually the soil was good, the climate was good, enough production was there, scope of trade was there, right? तो वहां पे आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है. ओके नहीं बेटा धीरज, ग्रीन रेवोल्यूशन हिस्ट्री, इतना नजदीक वाली हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे. ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ इंपॉर्टेंट इवेंट, बट वो बहुत रीसेंट हिस्ट्री है. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस, हिस्टोरिकल प्रोसेस सैकड़ों साल यहां चल रहा है. ओके हाँ, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड एवरीथिंग, पोर्ट जहां पे आया, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ वेरी रिसेंट थिंग. और ग्रीन रेवोल्यूशन ने हर जगह को एक जैसा कर दिया ऐसा नहीं है, वो इतना बड़ा इवेंट नहीं है, ठीक है? दो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, बट ग्रीन रेवोल्यूशन लिमिटेड टू ए स्मॉल एरिया. फूड सबको मिल गया, प्रॉस्पेरिटी बहुत ही लिमिटेड, ठीक है? तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि पैन इंडिया इफेक्ट हम रिफ्लेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ लैंड कैपेबिलिटी, इट इज वेरी इजी, फर्टाइल एरिया, more agriculture, more production, more people. Inhospitable terrain, mountains में क्या है? less population, mountains, desert. Okay, now level of economic development, wherever there was poverty, the population increased more. ठीक है, जहां भी कॉलोनियल लोग ज्यादा दिन रहे वहां ज्यादा पॉवर्टी हुई. ठीक है, हिस्टोरिकली भी कॉलोनियल लोग क्या कर रहे थे? दे वर एक्सप्लॉइटिंग यूपी, बिहार, ठीक है, डाई उगाना है, बंगाल, जूट चाहिए, तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ज्यादा दिखाई देगी. ओके, सो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी आप मॉडर्न टाइम्स को भी देखेंगे, दोज स्टेट्स विच आर बैकवर्ड, पुअर, ठीक है, बीमारू स्टेट्स कहते हैं. सो वहां क्या है? बहुत इंपैक्ट है पॉपुलेशन का, इफ दिस इज फेवरेबल. ठीक है, ऐसा नहीं कि डेजर्ट में भी राजस्थान वाज आल्सो कंसिडर्ड बीइंग पार्ट ऑफ द बीमारू स्टेट, बट वहां जब कुछ हो ही नहीं पाएगा तो लोग कैसे रहेंगे, राइट? सो बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स, ओके, देयर इज some distribution of population, the uneven distribution of population in the country, and we can divide the regions. Okay, we can divide the population distribution
based on density. Into 4 categories. ठीक है, मेरे शहर से आपके शहर में ही पॉपुलेशन अलग है, तो एक एक शहर को डिफरेंस नहीं देख सकते हैं. एवरी विलेज हैज अ डिफरेंट पॉपुलेशन. Okay, but at an average we'll be looking at 4 categories. Okay, at an average we'll be looking at 4 categories. The first one is very high density areas. Write down very high density areas. Okay, and when we say some area is very high density, it means that the population is above 400 persons per square kilometer. Okay, very high density is 400 persons, 400 individuals per square kilometer. Second is high density areas. You write down, I am not going to write here because I'll start with this only. Second one is high density areas. High density areas between 200 to 400 persons per square kilometer. High density 200 to 400 persons per square kilometer. Third one is moderate density. Moderate density. Moderate density. Moderate density is 100 to 200 persons per square kilometer. Moderate is 100 to 200 per square kilometer. And finally, low density areas below 100 persons per square kilometer. Below 100%. Okay. Now, first I'll show these areas and then we'll talk about them. Okay. Very high density areas. In exam, you'll not be supposed to write much if you use the diagrams. Like I always tell you that geography has a language of its own. You can use the diagrams to present the things that you want to show. Okay. So let us suppose that this is a sketch map of India. Okay. So we'll be using two maps. In one of the diagrams, I'll be showing you what exactly is the high density area, which of these areas are representing the high density areas. In another one, we'll be looking at some of the reasons. ये एग्जाम में कैसे लिखना है उसके लिए बुक में तो क्या है कहानियां लिखी रहती है. I'll give you a कहानी as well for this one. Okay, but you are not supposed to use or write that much in exam. High density, tell me, आपको पता है कहाँ पे है? कोस्टल एरियाज ही है, बाकी कोई एरिया है ऐसा? अगर साउथ में देखेंगे दिस इज कोस्टल एरिया, रेस्ट प्लेन्स. ओनली द प्लेन्स के बारे में आप कह सकते हैं. ओके, सो इफ यू लुक एट द हाई डेंसिटी एरिया, simply you know that this is something here. Okay, this is the area which you can call as a high density area. Okay, नॉर्थ इंडिया में सिर्फ यही हाई डेंसिटी एरिया है. नाउ द कोस्टल एरियाज वेरेवर द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट वाज देयर, वेस्टर्न घाट के बाद नहीं है. ठीक है, वेस्टर्न घाट जहां पे हावी हो गया वहां पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है. Southern part, this much area, the coastal one, and you can talk about some of these areas. ठीक है, so very high density, these are the areas which are having very high density. Rest of the places we cannot say कि बहुत high density है. Okay, so this is high density, very high density areas. Okay, this is this. And always level your diagram. This is India. Now, if you look at this thing,
हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, सॉइल पढ़ लिया है, क्लाइमेट पढ़ लिया है, फिजिकल इंडिया पूरा ही पढ़ लिया है, रिसोर्सेज भी पढ़ लिए हैं. ओके, इंडस्ट्री दो यू हैव नॉट स्टडीड इन डिटेल, विल बी डूइंग इट, बट यू हैव फेंट आइडिया इंडस्ट्रीज भी कहाँ पे है. सो इफ यू लुक एट दिस वन, sorry, what is the ISO height that passes through this area? यहां जो बारिश होती है वो कितनी है? This is 100 centimeter ISO height. Okay, so this is a area where the rainfall is around 100 centimeters. यहां के आसपास क्या है? 100 सेंटीमीटर की लाइन इस जगह से ही जा रही है. From the perspective of geography, you are indicating the high density. Why? Because the nature is supporting good amount of rainfall along these regions. ठीक है, both the Bay of Bengal branch, Arabian branch is bringing rainfall to this area. दूसरा advantage क्या है? If you talk about this area, this is also what? This is the area which is alluvial plain. Okay, the coastal area, this is alluvial, this is alluvial, this is what? Alluvial soil. Anybody has any doubts about it? Physical India, you know, सबसे fertile soil इसी area में मिलता है. This is representing the same area. ठीक है, यहाँ alluvial soil भी बहुत सारा है. Now, if we talk about the major industrial regions, mineral resource rich regions, ये एरिया कैसा है? Major urban area, industrial area. This area is what? Resource rich area. This region is what? Major urban area. This region is what? Port area. So if you look at this area, अभी यही जो यहां पे अगर आइसो हाइट की हम बात कर रहे थे, so तमिलनाडु is like what? It receives rainfall from नॉर्थ ईस्ट मानसून, और गर्मियों में भी क्या है, थोड़ी बारिश तो होती है, तो रेनफॉल अगेन इज गुड. यहां भी अगर आप देखेंगे रेनफॉल इज गुड, सो यू कैन रिप्रेजेंट रेनफॉल हियर ऑल्सो. ओके, नाउ दिस एरिया, यहां क्या है, बहुत सारे शहर हैं. These areas are like what? So this urban, industrial, resource rich, modes of transport are developed. कहीं पे अगर पोर्ट है तो कहीं पे रोड है तो कहीं पे रेलवे है. ओके, सो ऑल द अदर रीजन्स इफ यू लुक एट, these are all advantageous areas from the perspective of economy. ठीक है, ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफी डेवलप्ड एरिया है. सो यू नीड टू फोकस ऑन some of these reasons. And if you remember these two maps, don't you think that you will be able to write few lines also if you try? ये कौन सी जगह है अगर कोई पूछता है तो क्या है ये? Okay. The reasons are easy to write, the Ganga plains and everything. Okay. हाँ स्वाति बेटा, डू यू थिंक यू कैन मैनेज? लिख सकते हैं इसके बारे में, दो आई गिव यू ए राइट अप, बट दीज टू डायग्राम्स मोर देन सफिशिएंट टू राइट ए डिटेल्ड आंसर एज वेल, डोंट यू थिंक? लिख सकते हैं हाँ नहीं,
Don't be afraid कि I'll not give you the write-up. I'll give you. Okay? But at least don't you feel that you can write. In exam, you'll not have much opportunity to write as well, though I'll be giving you a write-up. But in exam, you need to take help of diagrams. Okay? And these all plains, यूपी में क्या है, highest number of urban areas है, ठीक है. It is not as developed as let's say Maharashtra or Gujarat, but urban centers if you look at tier 1, tier 2, tier 3 cities, सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूपी में. ओके, तमिलनाडु और यूपी में क्या है, आगे पीछे चलते रहता है. तमिलनाडु ऑल्सो हैज lot of towns, but if you population wise and development wise you'll see UP has lot of towns, right? So write down. There are three different clusters of very high density. There are three different clusters of very high density. Three different clusters of very high density. First one is Indo-Gangetic plains. Indo-Gangetic plains. Indo-Gangetic plains. Second one is Kerala and Tamil Nadu uplands. Kerala, Tamil Nadu uplands. And the third one is deltaic, ये स्प्रेड है, ठीक है. डेल्टाइक बेल्ट्स ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा, डेल्टाइक बेल्ट्स ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा, डेल्टाइक बेल्ट्स ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा. And parts of Maharashtra and Gujarat coast. Parts of Maharashtra and Gujarat coast. Parts of Maharashtra and Gujarat coast. Okay. Now let's say you are supposed to write on Indo-Gangetic plains. यहाँ पे क्या क्या के बारे में लिख सकते हैं. Okay. Most of the factors I have listed down here. If you have a big question, let's say in the very high density areas only. So what you will be writing here? Indo-Gangetic plains. Can't you write about the alluvial plains, the fertility, the green revolution thing जो अभी आप कह रहे थे, क्योंकि ये density क्या है, हम आज की बात कर रहे हैं, हम past की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about what exactly is here. So don't you think you can talk about all of that? Green revolution भी यही हुआ है, Indo-Gangetic plains. Okay. So extremely fertile plain with adequate rainfall, with lot of historical processes which developed many urban areas, and gifted with some of the initiatives like green revolution. This area has emerged as one of the densest populated areas in India. Something like that you can write, right? But still for those people who are like नहीं लिख पाएंगे, ऐसा कोई है तो बताइए. Okay. So everything is here. Okay. Indo-Gangetic plains have, this area have, लिखिए मैं लिखवाई देता हूं, this area have extremely fertile alluvial soil. This area have extremely fertile alluvial soil. Adequate rainfall added by irrigation facility. Adequate rainfall added by irrigation facility. Adequate rainfall added by irrigation facility. हाँ धीरज बेटा, very good. Added by irrigation facility, comma, year-long growing season. Year-long growing season, comma, pleasant climate. ठीक है. अब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, ओवरऑल क्या है, एट एन एवरेज प्लीजेंट है. ठीक है. मौसम थोड़ा गर्म
गर्मी का मौसम भी है, ठंडा भी है, नॉर्मल वाला भी है, तो एवरी प्रेजेंट क्लाइमेट and predominantly agrarian socio-economic setup and predominantly agrarian socio-economic setup. Full stop. At the extremities of these two areas, are two big urban centers, Delhi and Kolkata. Two big urban centers, Delhi and Kolkata. And this region has a close proximity to, the mineral rich Chota Nagpur plateau. Has a close proximity to the mineral rich Chota Nagpur plateau. Has a close proximity to the Chota Nagpur plateau. हाँ स्वाति बेटा, you can talk about that as well. Okay. वो भी लिख लीजिए. Full stop. Close proximity to the mineral rich Chota Nagpur plateau. Full stop. The partition of India. And establishment of Bangladesh as an independent country. The partition of India and establishment of Bangladesh as an independent country brought a huge population towards India. Who settled in this region? Okay. So हर factor जो आप सोच सकते हैं वो इस region में है. Okay. Everything that tells you that this area has to have a very dense population is here. Okay. Every resource, every event that you can think of इस zone में है. Okay. Now Kerala and Tamil Nadu uplands. Let us talk about Kerala and Tamil Nadu uplands. Second one. Now अभी ईयर लॉन्ग ग्रोइंग सीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो यहां भी है. If you look at these areas, fertile soil is there. Okay, so year long growing season. So you can talk about Kerala, Tamil Nadu uplands, year long growing season due to the fertile soil. Year long growing season due to the fertile soil. Industrialization, urbanization, transport, efficient transport system, efficient transport network. Okay. So similar factors ही होते हैं. It is also in close proximity to what? Mineral rich areas. कर्नाटका में बहुत सारा मिनरल है, उसका फायदा इनको भी मिलता है. ठीक है. Now deltaic plains, again महानदी गोदावरी की बात कर लीजिए, ये यहाँ की बात कर लीजिए. Again you have same thing, this thing only. Okay. So in exam what I want you to understand is you'll not have enough opportunity to write about everything. So what you are gonna do, you'll be writing these three names, you'll be drawing these two diagrams, and you'll be mentioning all the factors here, because there are three more regions that you have to explain. Agar full question is only on very high density area, then and then only you'll be able to write the thing that I have given you. Else you'll not have an opportunity. Then you'll have to contain yourself with these two diagrams, this one and that one. Maybe you can write some of the names, Delhi yahan, Kolkata dikha diya, Mumbai dikha diya. That you can do. Okay, Chota Nagpur plateau dikha diya alag se. That you can do. But writing
those many words not possible. So do not go for it. आई एम गिविंग यू, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या है कि मटेरियल कम हो रहा है, जाता ही नहीं है. तो एज ए टीचर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि थोड़ा मैं लिखवा भी दूं. बट यू विल नॉट रिक्वायर दैट मच. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाई डेंसिटी एरियाज 200 to 400. अब ये हाई डेंसिटी एरियाज कहां होंगे? अचानक फर्टाइल सॉइल खत्म, पानी बरसना खत्म, ऐसा तो हो नहीं सकता है. ओके, सडनली एवरीथिंग विल बी लॉस्ट. इट इज नॉट लाइक कि अर्बन एरिया बिकम्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फार, ऐसा नहीं हो सकता है. सो वेरी हाई डेंसिटी के बगल में ही होगा. हाई डेंसिटी एरियाज बहुत दूर जाके नहीं हो सकता है. ओके, इट मीन्स दैट इफ यू ट्राई टू रिप्रेजेंट दिस थिंग, sorry, if you're going to represent this thing, this is going to be somewhat nearby that place only. Okay, जो आपको अभी आपने देखा है. Okay, so this is the area जो हम उसमें छूट जाता है, पहाड़ियों के बिल्कुल पास जो एरिया है. दिस इज तराई बेल्ट को आप मान लीजिए थोड़ा सा. ओके, यूपी थोड़ा सा बिहार तक आप ले जा सकते हैं. दिस इज द एरिया. ओके, देन जस्ट जहां ये खत्म हो रहा था, some of the area which is around here. Okay, a small patch here, a small patch around, and जो एरिया हमने यहां छोड़ दिया था, दिस इज द एरिया. मिनरल रिच एरिया आपका, दो रेन इज नॉट मच हियर, बट स्टिल mineral wealth had made sure that this is also an area where a lot of population is there. Some of the area around this place जो छूट गए थे, उनके आजू बाजू ही आपको दिखाई देगा कि a lot of population is there. And of course, if you'll go to the Assam Valley, okay, so this is the area where the density of population is between 200 to 400 persons per square kilometer. Okay, ऑलवेज लेवल योर डायग्राम्स. ठीक है, देखने में इंडिया लगे भी तो इंडिया है ऐसा लिखेंगे हम. नाउ टेल मी कि यहां क्या है. ओके, यू कैन शो सम मोर, फ्यू मोर प्लेसेस, बट वो बहुत छोटे छोटे पैचेस में है. तो मेजर वाला हमने दिखा दिया, इट इज मोर देन सफिशिएंट. नाउ व्हाट इज दिस? अब इसमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? द टोपोग्राफी इज नॉट प्लेन, ये तो पता है. ओके, अनड्यूलेटिंग प्लेन्स होंगे ये, रिलेटिवली लेस फर्टाइल एरिया या लेस रेनफॉल एरिया. ओके, बट दे आर इन टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ दोज एरियाज विच आर वेरी फर्टाइल. तो इनके पास वो एडवांटेज नहीं है जो उनके पास है, लेकिन उनसे एकदम ही कम है ऐसा नहीं है. दे आर नियर बाई समवेयर. ओके, so tell me what you'll be writing. हाँ धीरज बेटा, you can talk about the तराई बेल्ट के बारे में, आप उत्तराखंड के बारे में आप बात कर सकते हैं. ठीक है, एकदम ही प्लेन एरिया, बहुत पतला सा एरिया जो मैप पे हम नहीं दिखा पाए शायद. ओके, दिस इज वेरी क्लोज टू द वेरी हाई डेंसिटी एरिया. ओके, ब्रह्मपुत्रा वैली. अभी इसमें हम त्रिपुरा को भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा एरिया है, तो अब कितना दिखाएंगे, तो हमने नहीं दिखाया. ठीक है, सो दीज एरियाज आर लाइक डिफिकल्ट. यहां क्या है? ब्रह्मपुत्रा प्लेन है. ओके, तो यहां एडवांटेज आपका क्या है? फर्टाइल प्लेन. बट दीज ऑल एरियाज दैट वी आर शोइंग, दे ऑल्सो हैव सर्टेन डिसएडवांटेज. फर्टाइल प्लेन तो है, बट प्रिवलेंस ऑफ डिजीजेस, ये दोनों एक साथ एसोसिएटेड है. दो लॉट ऑफ पीपल
एक्चुअली वेयर देयर अहोम किंगडम वॉज देयर, हिस्टोरिकली आप देखिए अहोम किंगडम यहाँ पे था, ओके, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फ्लरिश हियर बिकॉज ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ diseases, okay, the population growth and everything was not taking place, plus it is limited area covered by mountains in the surrounding. Plus the negative is like they are marred by the natural disasters. So despite having the biggest advantage which helps a civilization to grow, that is fertile alluvial plain, it doesn't have very high density, okay. फिर level of economic development you can talk about, यहाँ क्या है, गुवाहाटी बिगेस्ट सिटी है, और होल नॉर्थ ईस्ट में इससे बड़ा कोई शहर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि अभी भी ज्यादा डेंसिटी है, डिस्पाइट सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस दैट वी हैव मेंशन्ड, स्टिल इकोनॉमिक माइट है उसका पूरी नॉर्थ ईस्ट में, ओके. सो इट इज, हाँ धीरज बेटा, सो if you'll try to mug up everything, this may seem little difficult, okay. अब ये बाकी एरियाज कैसे हैं, they have all the advantages, okay, they have the mineral resource, ये कैसे एरियाज हैं, proximity to mineral resource rich area, proximity to industrial urban mineral rich areas, okay, if you look at this area. लेकिन यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टोपोग्राफी, बट द प्रॉब्लम इज अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी. रेनफॉल इज नॉट दैट हाई, ठीक है. अब यहां पानी की कमी है, दे आर रेन शैडो एरिया, तो ड्राईलैंड फार्मिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज आर नॉट दैट डेवलप्ड. अगर इरिगेशन फैसिलिटी उतनी डेवलप्ड होती तो ये भी शायद क्या है और डेंस हो सकता था, ओके. So certain disadvantages are associated with these areas, certain level of disadvantage which is not allowing, but बहुत सारा urban development यहाँ भी है, ठीक है, शहर है, तो ये एरिया भी क्या है आपका डेवलप हो चुका है, इसकी भी यही डिसएडवांटेज है, रेनफॉल, ठीक है. बाकी क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, प्रॉक्सिमिटी टू अदर सिटीज, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा है, okay, if you look at good transportation, all such advantages, good transport, यहां भी है good transport in these two areas. So instead of mugging up everything, if you can come up with some of the points that you already know by reading Physical India, ठीक है, आपको जहां रह रहे हो उससे भी सुना है, देखा है, if you'll try to write with that, राइटिंग अबाउट क्वेश्चंस you'll ऑलवेज हैव मोर आंसर, लेकिन याद करके लिखेंगे, रट्टा मारेंगे, ठीक है, तब मजा आएगा. तो फिर बेटा एग्जाम में पेपर ही कवर नहीं होगा, रिवीजन नहीं हो पाया, बैठ के रोना पड़ेगा, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, ओके. ये गेटिंग द पॉइंट और नॉट, दिस इज समथिंग दैट यू कैन मैनेज, हाँ ना नहीं बताएंगे, ऐसा मैनेजेबल है. Now they are wise enough to choose the crops which is according to the soil, and this is the reason that high density is still is there. अगर ये गलत क्रॉप्स यूज करते ट्रेडिशनली तो इनकी हालत खराब हो जाती, ओके.
Great. Now we'll look at moderate density areas. And this is something that you'll be doing in exam. ये करना ज़्यादा आसान है, इंस्टेड ऑफ बहुत लंबे चौड़े लाइन लिख के और डायग्राम बना के छोटा सा एरिया दिखा दिया. दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच. डायग्राम पे को बीच में बनाएंगे और चारों तरफ आप लिख सकते हैं. नॉलेज सबको होता है जो मेंस लिखते हैं. ओके, दे विल बी इक्वली नॉलेजेबल. आप ऐसा मैं बाबा हूँ ऐसा नहीं कह सकते वहाँ जाके मैंने बहुत मेहनत की मुझे बहुत आता है. एवरीबडी नोज दैट. द पीपल हु आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट वेल will be more organized, will make it easier for the examiner, will get more marks. That is simple thing. हाँ, तो ये अभी जो मैंने बताया है ये आपको बहुत याद नहीं करना है, राइट? यू कैन मैनेज इट नाउ. अब उसी में कहीं फंसा हुआ एरिया होगा ये मॉडरेट वाला, ठीक है? अभी हाई डेंसिटी लो डेंसिटी के बीच में कहीं मॉडरेट डेंसिटी होगी. ओके, सो इफ यू ट्राई टू रिप्रेजेंट दिस वन, देन अगेन लो वाले एरिया से कहीं दूर होगा. और एग्जाम में यूल मेक डायग्राम्स फास्टर बनाना है, बहुत ऐसा खूबसूरत सा और सिर्फ डायग्राम ही दिख रहा है और कुछ काम का नहीं है, टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं करना. रफ स्केचेस विल डेफिनेटली डू. फर्स्ट फ्यू डायग्राम्स हैव टू बी इन right proportions, later on you can manage. Okay, now we have almost, if you see हमने यहाँ वाला एरिया भी ले लिया, ये भी ले लिया. Okay, coastal areas we have represented, so we do not have much area which is left. So उस एरिया में बीच में जो भी बचा हुआ है, okay, some of the areas that are left, okay, that we haven't touched yet, will be representing those only. Okay, this is. And always level your diagrams, India. So this is some area. Okay, so basically central India. अरावली से आप मान लीजिए लगभग अरावली रेंज को भी आप चाहें तो यहाँ थोड़ा इसे बढ़ा के दिखा सकते हैं ऐसे भी. सो अरावली से लेके ये वाला जो बीच का एरिया है, ओके, इट इज मॉडरेट डेंसिटी एरिया. यहाँ क्या है कि एमपी छत्तीसगढ़ सारा दैट comes under this. ठीक है, तेलंगाना आप देख सकते हैं पार्ट ऑफ दिस. कर्नाटका वाला हिस्सा भी बहुत हद तक आ जाता है. सो मे बी आप चाहे तो इसको थोड़ा इधर भी दिखा सकते हैं. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज मॉडरेट डेंसिटी एरिया. ओके, नाउ व्हाट यू कैन राइट हियर. अभी जैसा मैंने बताया उस हिसाब से बताइए इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं. ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, पार्ट्स का पूरा नहीं. ओके, पार्ट्स ऑफ एमपी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र तेलंगाना. कर्नाटका. व्हाट यू नो अबाउट इट. फिजिकल इंडिया पढ़ा है हमने, कैसी जगह है ये? नहीं भी पढ़ा है तो कैसी जगह है ये? इंडिया तो जानते हैं, बचपन से कभी कुछ नहीं पढ़ा है, अचानक ख्वाब आया आईएएस. कुछ तो सुना है भारत के बारे में, कैसी जगह है ये? यहां कैसा है? अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी. पीक्स एंड वैलीज, बहुत सारे माउंट्स है, पीक्स एंड वैलीज. ओके, अभी इसमें जितने माउंटेन्स आप विंध्या सह्याद्री सारे यही हैं? नहीं है. सॉइल कैसा है ये?
रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, इसमें कैसी खेती होती है? यू नो दैट। आर दे गुड क्वालिटी सॉइल? इसमें जो मन करे उगा लेंगे? कैन यू डू दैट विथ रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल? यू आर डन विथ बायोजियोग्राफी, यू आर डन विथ फिजिकल इंडिया, इतना तो पढ़ाया है मैंने। ओके, प्लस व्हाट अमाउंट ऑफ रेनफॉल? वेस्टर्न घाट ब्लॉक्स, साउथ वेस्ट मॉनसून doesn't receive much from northeast monsoon, तो रेन शैडो है। सो फार्मिंग अच्छी हो नहीं सकती है, सॉइल ही खराब है। प्लेन्स बहुत ये ज्यादा है नहीं। ओके, inadequate rainfall, some of the areas may receive 60, 70, 80 centimeter, but most of the area is like what, averaging 50 centimeters, 40 centimeters. So this area, यहां irrigation है क्या? lacks irrigation facility. Okay, though India is one of the most fertile areas, most irrigated areas, almost 35% of the area is irrigated, but still यहां बहुत नहीं है। हाँ विवान, वेरी गुड। सो फिर यहां मॉडरेट डेंसिटी फिर भी क्यों है? रग्ड है, फॉरेस्टेड है, सब कुछ है, ठीक है, फॉरेस्टेड, अनड्यूलेटिंग, बट स्टिल मॉडरेट है। मैंने जितना लिखा है ये देख के तो लगता है कोई रहेगा ही नहीं। रहते क्यों है? बिकॉज पीपल लिव इन पॉकेट्स। ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी बैड, बट इफ यू लुक एट दिस एरिया, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस आर देयर। यहां क्या है? दिस इज ए एरिया वेयर industrial complexes are there. Okay, these regions have industrial complexes. The biggest advantage, industrial complexes, because of mineral availability. Resulting in townships with high population density. So the average is this. अगर ये टाउनशिप्स माइनस कर दीजिए, इट विल फॉल इन लो कैटेगरी, ठीक है, द पॉपुलेशन विल फॉल इन लो कैटेगरी इफ दिस इज रिमूव्ड। ओके, तो यहां नेचुरल रीजन से ज्यादा क्या है? ह्यूमन कॉजेज ने हेल्प किया है पॉपुलेशन को सेटल करवाने में, डेंसिटी को बढ़ाने में। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस रीजन। एवरीबडी इज क्लियर? समझ में आ रहा है? All the areas we have seen that the natural causes were also very positive, very supporting. But if you talk about this area, ठीक है, so this is one area where recent urbanization has played a role to increase the population density.
Okay, so you need to make sure that you put this point forward when you write it. ठीक है? Okay, write more organized than what I have done. I do not have a scope, right? इस पेज को next करना पड़ता है. So this is one area. You modernization खत्म करिए, population यहाँ कम हो जाएगी. Okay, now low density areas, very easy. Low density areas. Okay, so we'll be continuing till we are done with this topic. Low density जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम continue करेंगे. This is not about the time. घड़ी देख के जो बच्चा बैठा है उसको दुख होगा अभी. Though this is the last topic, but will not compromise with the discussion. Okay. Now, very easy. This is the desert area. ठीक है, यहाँ desert है तो यहाँ population बहुत ही कम है. Okay. You can talk also about the this part. ये भी लगभग same है. Okay. Now whole of the mountainous area, नॉर्थ ईस्ट का जितना दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है. This is something, okay, less population relatively. Some of the chunk here and there. So if you want you can represent that, if you don't want you can leave that. So this is the area. इसके बारे में लिखने में कोई दिक्कत? From Jammu and Kashmir, the northeastern states, the nature has not given low carrying capacity. All these places, आपका एक common क्या है? Low carrying capacity, inhospitable terrains. The resources are not enough. Okay, though there are lot of trees, लेकिन सिर्फ फल खा के आप पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे ऐसा नहीं है. ठीक है, जंगलों में बीमारियों में रह के आप पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे ऐसा नहीं. जहां जंगल है भी, स्टिल डिजीज डज नॉट अलाउ द ग्रोथ इन पॉपुलेशन. ओके, और यहां क्या है? वेरी डेंस फॉरेस्ट. तो लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स, लॉट ऑफ डेथ्स. मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल. हंटिंग गैदरिंग के लिए गए, मारे गए. ओके, except Assam and Tripura, none of the state had enough of carrying capacity. ठीक है, ये दोनों फैक्टर बाकी आपके पहाड़ी स्टेट्स में सीधे गायब है. बारिश की अगर हम बात करें, एक जगह एक्सट्रीम है. इसका क्या है? दिस इज, इफ यू रिमेंबर, दिस इज 20 centimeter iso height. So chances of survival in such less rainfall. Okay, और यहां क्या है? If we talk about this is 250 centimeter rainfall. Too much and too less. Okay, this is again, if we talk about 20-40 centimeter. So too much or too less की situation है यहाँ. Okay, and this is the reason that the यहाँ क्या है? Degraded mountain soil. यहाँ क्या है? Desert soil. So both have less productivity. Agriculture में possibilities ही नहीं है. Okay,
कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन, बैड, नेचुरल डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड्स बहुत सारे होते हैं, एवलांच. So the negative things are too many which did not allow the population to grow, places to settle down, वो भी नहीं है. Okay, very difficult to make a big settlement. अभी स्लोप पे बनाया, स्लोप ही क्या है, फिसल गई, लैंडस्लाइड हो गया, पूरा सेटलमेंट ही गायब. Okay, so be it the natural factors, be it some of the activities that humans can do, you cannot develop easily. See Uttarakhand, the government is trying, but lot of accidents are happening still. हमेशा आप क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उत्तराखंड में यहाँ गाड़ी गिर गई, वहां हो गया, यहाँ हो गया, यही आता है. ओके, एक्सट्रीम एरिडिटी, वहां रोड बनाते हैं, अभी आपका क्या है कि पता चला धूल आ गई, पूरा कवर कर लिया, यू कैन नॉट मेंटेन इट इजीली. ओके, मूविंग सैंड ड्यून्स, वो कभी कवर कर गया, सेटलमेंट को कवर कर गया. तो naturally these areas are not conducive, neither the carrying capacity is there, and if everything remains negative, the population cannot increase in an area. Clear है? धीरज बेटा, इनर लाइन परमिट, हाँ ठीक है, वो पॉलिसी है कल्चर को बचाने के लिए. ओके, बिकॉज अभी आप जहां भी अलाउ करिए, यहां इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है ना, इनको जहां बोलेंगे वो कूद जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे. तो आप इनर लाइन परमिट नहीं रखेंगे तो ये आधा बांग्लादेश अभी नॉर्थ ईस्ट में भी रह रहा होता. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स एंड यू हैव टू टॉक अबाउट दीज. एंड इफ all these conditions are prevalent in any part of the world, the kind of things that are here, it's very easy to understand that people cannot survive. After all, nature has to have the carrying capacity for the number of individuals that it can sustain with the resources that it has, जो कि यहाँ missing है. Okay, all good, everybody is clear with this? मैनेजेबल है, 2-4 लाइन लिख सकते हैं. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में लिख देंगे थोड़ा, लद्दाख में क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, कोल्ड डेजर्ट, पानी नहीं है. राजस्थान पता ही है, नॉर्थ ईस्ट का हमने बात ही कर ली. यू जस्ट हैव टू मेंशन सम ऑफ द रीजंस. ओके, प्रोडक्टिविटी लेवल्स आर लो, नो बिग अर्बन एरिया, अर्बनाइजेशन मिसिंग ही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मिसिंग ही है. ओके, सो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर. ओके, all of these things negative, and if everything is negative, the population cannot go positive, right? So अपने chapters का नाम भी याद करके लिखेंगे ना. याद, when I keep telling you that it is not necessary to mug up everything, some news, some fact that is there, some example that is there, that you can remember, but just think of the name of the topics that you have to read. Okay, urban development, urbanization is your chapter, settlements are there, right? Settlement, transport, trade. So trade है यहाँ, trade and economy, so not much developed. So backwardness, agriculture not developed. Just think of the chapters that you read, write about half of them, you are done with the write up. Okay, nothing much to mug up. And this is the beauty of human geography. ऐसा कोई बच्चा आके बोले कि ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं लिख पाया, तो इसका मतलब है कि उसने ट्राई ही नहीं किया, ही इज नॉट रेडी टू राइट. ओके, बिकॉज इट इज ऑल सराउंडिंग. इफ यू आर ऑब्जर्वेंट, जो सुनते हैं उस पर थोड़ा सोचते हैं, यू कैन एनी गिवन डे यू कैन राइट ए आंसर. गुड बैड ठीक है, वो बाद में देख सकते हैं कि सम गुड एग्जाम्पल यू हैव रीड फ्रॉम न्यूज़पेपर, द क्वालिटी विल इम्प्रूव, सम डायग्राम्स विल पुट इन there, your quality will improve, but not able to write,
is simply not acknowledging the thing that you know. Okay, this is not about रीडिंग. ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ के ही लिखेंगे ऐसा सिर्फ थ्योरीज है, थ्योरीज एंड मॉडल्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी, वो भी कहानियां है. ओके, बारिंग इफ देयर इज अ रेगुलर क्वेश्चन, देयर इज नथिंग आस्क्ड बाय यूपीएससी दैट यू कैन नॉट राइट without reading. If you are reading newspaper, you can write. If you have seen your village, you can write. If you have traveled somewhere, you can write. So be aware, observant. Okay, normal awareness से आप लिख सकते हैं. So we'll stop here only, and tomorrow we'll be starting with the theories. ठीक है, first half an hour maybe I'll talk about reasons behind increase in population and kind of things that you know, and thereafter we'll venture into population theories. उनको करने के बाद we'll move to migration, तो migration के general perspectives and then migration based theories. Chapter done. Okay, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं है तो ब्रेक लेंगे, खाना खाएंगे और आज के आज फिर से इसको 10-15 मिनट देखेंगे, दिमाग में फिट करेंगे, हेडिंग्स को, डायग्राम को बना के प्रैक्टिस करेंगे. इट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये वाले थ्योरी में रहेंगे, कल के लिए मत छोड़िए, डू इट टुडे. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया, फर्स्ट रीडिंग आज ही कर लीजिए, कल से रिविजन. ओके, सो अगेन I'll take your leave. अगर दिमाग में बाद में क्वेश्चन आता है, you can ask me tomorrow. So everyone, stay healthy, stay blessed. Thank you very much.